Good evening, everyone. Dear friends, nowadays there are too many cases suffering with the endocrine disorders. तो थोड़ा सा आज हम endocrine glands का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे. So, what is the root cause of all endocrine disease? हमारे शरीर में जितनी भी endocrine प्रॉब्लम होती हैं, बीमारियां होती हैं, उन सभी का मुख्य कारण कौन है? Who is responsible? So we can tell who is responsible for the problem of the ovary, who is responsible for the problem of testicular or the male sex hormone, who is responsible for the problem of the thyroid, parathyroid. इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? Right. So we can tell pituitary gland or the master gland. और pituitary gland को भी कौन कंट्रोल करता है? Who is the control of pituitary gland? Who is the control of pituitary gland? So we can tell that the hypothalamus on the brain, right? So hypothalamus inside the brain is the controller of pituitary gland. If I ask you, tell me, which meridian is connected with the hypothalamus? हमारे शरीर का वो कौन सा मेरिडियन है जिसका संबंध हाइपोथैलेमस से? द मेरिडियन हु कंट्रोल द हाइपोथैलेमस. So this is the supreme part of the brain which is called hypothalamus, where we have hypothalamus. Hypothalamus is very highly influenced by the emotions. इसके ऊपर इमोशंस का बड़ा गहरा फर्क पड़ता है हाइपोथैलेमस के ऊपर. That's why when the person is emotionally imbalanced, getting many hormonal diseases, बहुत सारी हार्मोन की बीमारियां होती हैं. जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, right? Suppose one female is suffering with the problem of the ovary. एक फीमेल को ओवरी की प्रॉब्लम है, ही सफरिंग विद द पीसीओएस और द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और द पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. अगर किसी फीमेल को ओवरी में सिस्ट बन रहे हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को, आखिर क्या प्रॉब्लम है? देन वी विल टेल, ओके, द फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस इज अफेक्टेड, which is a part of the brain. Then it's affecting the pituitary gland, which is a part of the endocrine system. Then the pituitary gland is affecting the ovary, or we can tell ovary, right? Then ovary is controlling all reproductive functions. तो चेन हाइपोथैलेमस से स्टार्ट, फिर पिट्यूटरी पर आती है, फिर ओवरी पर आती है, फिर हमारी जेनेटल फंक्शंस पर आती है. And hypothalamus is highly influenced by the emotions. That's why when the female are suffering with some emotional issues, they are suffering, they are getting ovarian cyst. It's a very common. So there are multiple cyst formation in the ovary. Then how to treat the polycystic ovarian cyst? हम कैसे ठीक करेंगे PCOS? आखिरकार हम कैसे ठीक? So we have to do the treatment of the hypothalamus first. This is the number one treatment.
Then we have to do the treatment of the pituitary gland. Then we have to do the treatment of the ovary. तभी हम ओवेरियन सिस्ट पर काम कर पाएंगे, यानी देयर आर मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट और दैट इज कॉल्ड हाइपर folliculine condition or the multiple cyst in the ovary. But we will able to work. So when the female is having multiple ovarian cyst or the polycystic ovary, जब भी एक महिला को ओवेरियन सिस्ट होता है या पीसीओएस होता है, तो होता तो यहां से, यानी वो कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. बट व्हाट आर द सिम्टम्स हैपनिंग? क्या लक्षण पैदा होते हैं? Then we know there are many symptoms is happening, right? Number one, the symptom in the PCOS. What are the symptoms happening? Number one, irregular menstrual period. हम देखते हैं कि कई बार डिले होता है, कई बार अर्ली होता है, बट ज्यादातर डिले ही होता है. द मोस्ट ऑफ द टाइम it might be delayed. Many female are getting period in 2 months, 3 months, 4 months, or in the alternate month. There might be irregularity with the menstrual period. Number two, the flow might be very heavy. Number three, there will be painful menstruation. दर्द होगा. दर्द के साथ, so there might be painful menstruation during the menstrual period. So this is the sign of PCOS. So number one, irregular menstrual period. Number two, flow might be very heavy. And number three, painful menstruation. We see there is an unwanted hair growth. Unwanted hair growth over chin. हम जानते हैं कि जहां चिन होती है वहां पर हेयर की ग्रोथ होने लगती है. Many female are getting overweight or the obesity. They are getting the overweight or the obesity. There would be very, we can see the mood swings. हम देखेंगे कि उनका मन काफी विचलित बना रहता है, right? They will be suffering with the anxiety. They will be suffering with the emotional fluctuations. They will be suffering sometime with the depression. And the most important thing, sometimes they are feeling difficulty in conceiving. उन्हें कंसीव करने में तकलीफ होती है. ये सारे लक्षण पैदा होते हैं when the female is suffering with the PCOS or the polycystic ovary. So how to manage the PCOS? How to manage? Just the treatment is the solution? क्या केवल treatment ही solution? So number one, definitely we have to give the treatment, but you need to start number one with the counseling the patient. Number two, advise something for emotional balance. सबसे पहले काउंसलिंग करिए, कुछ ऐसा एडवाइस करिए जिससे उनका इमोशनल बैलेंस. You might advise yoga, pranayama, walking, cardio, some exercise, something or the other
for emotional balance, right? Number 3, right diet. Nowadays, the wrong diet is also the cause. The fast food, packed food, lots of preservatives, also the cause who is aggravating this disease. And clearly tell the female avoid hormonal tablets. उन्हें बोलिए कि जितनी भी hormonal tablets हैं, try to avoid as much as possible, right? But if any hormonal tablet they are taking with the advice of the doctor, it might be something different. But otherwise, as an acupuncturist, as a natural healer, we don't advise to take the hormonal pills. If the female is taking for a while, for some time, it's okay. कुछ समय के लिए लिया जाना, क्योंकि जब गायनिक डॉक्टर के पास फीमेल जाती हैं तो वो उनको हार्मोनल मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं और कई हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं, राइट? ओके, so when the patient coming to us, first we are starting the treatment, counseling, emotional regulations, right diet, and avoid hormone tablet. In the case of the doctor's suggestions, it can be taken for some time. कुछ समय के लिए इनको लिया जा सकता है for a while, but not for too longer time, right? Now coming to the treatment part, first we have to work on the hypothalamus. सबसे पहले हमें hypothalamus पर काम करना होगा. As per the acupuncture, the hypothalamus is very deeply connected with the triple warmer meridian. The hypothalamus is the center of temperature regulation. The hypothalamus is the area of the brain who control water metabolism. The same all thing is done by the triple warmer meridian. चाहे हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करना हो या हमारे शरीर की वाटर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना हो, हम ट्रिपल वार्मर की मदद से कर सकते हैं. So triple warmer will be the meridian who can be taken for balancing the hypothalamus. So we'll start our treatment from here. अब हम ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की बात करते हैं. द ट्रिपल वार्मर मेरिडियन इज द वेरी बिग मेरिडियन. हमारा ट्रिपल वार्मर मेरिडियन तो काफी बड़ा होता है. And there are too many points in the triple warmer meridian. There are triple warmer 1 to the triple warmer 2, 3, 4, 5. Lots of points found in the triple warmer meridian till the triple warmer 23. तो आखिरकार हम कौन सा पॉइंट लेंगे? So we already know, as per the concept of 5 elements, we have already discussed the triple warmer 1, triple warmer 2, triple warmer 3, triple warmer 6, and the triple warmer 10. The third number point having this capability who can control entire meridian. So the triple warmer 3 will be taken for the purpose to balance hypothalamus. हम ट्रिपल वार्मर 3 को लेंगे. Now hypothalamus is releasing certain chemical, certain hormone. Then these hormones are controlling the pituitary gland. ये हार्मोन हमारी pituitary gland को कंट्रोल करते हैं. So we have at the triple warmer 3. This is the first point we are adding with the purpose to control the hypothalamus. So let's see the location of this point. So we are starting. There are many points coming in the sequence, just back to back. So let's start with the triple warmer 3. I will show you the location of this point. So look at the location of this point here. So we can see the 4th and 5th, between the 4th and 5th knuckle. We can feel the depression here
the proximal to the fourth and fifth knuckle, this is the location of triple wormer 3. हम देख सकते हैं कि चौथे और पांचवे हमारे नकल के पास, इसे एमसीपी जॉइंट भी कहते हैं, metacarpophalangeal joint से proximal, we can see the location of the triple wormer 3. So this is the point, excellent point. We can add this point here and we can activate the hypothalamus, right? Now, the process number 1 is over. Okay. Now we are moving further. अब हम आगे बढ़ेंगे. So now triple wormer, now hypothalamus is commanding our pituitary gland. But the pituitary gland is very big, बहुत बड़ी होती है. We can divide in 3 parts. Pituitary gland can be divided in 3 parts. Anterior pituitary, posterior pituitary, and the intermediate pituitary. तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 भागों में बांट दिया है. जब हम ओवरी की बात करते हैं, when we talk about the ovary, so ovary is connected with anterior pituitary, intermediate pituitary or the posterior pituitary. Who is guiding, who is commanding the ovary? Tell me, what do you know? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा विभाग है जो हमारे ओवरी को कंट्रोल करता है? टेल मी आंसर, बताइए. व्हाट्स योर आंसर? आखिरकार हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा भाग है जो हमारी ओवरी को, फीमेल की ओवरी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, राइट? परफेक्ट. सो लेट्स सी हियर, look at here. Now look at here, then tell me your answer again. Your answer is right, but there are 2 different answers. So let's talk about the posterior pituitary, because there are only 2 hormones. One is ADH, second is oxytocin. हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन निकलते हैं. एक जो हमारे यूरिन को रीएब्जॉर्ब करता है ताकि कम मात्रा में पानी का लॉस हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच. एडीएच मीन्स एंटी diuretic hormone. So this is acting in the kidney and reabsorbing the water so that only little amount urine can be passed. थोड़ा सा यूरिन बन के निकल जाए, ज्यादा यूरिन बनेगा तो बॉडी में से पानी की कमी हो जाएगी. तो ये तो हमारा एडीएच का काम हो गया. What is the work of oxytocin? Oxytocin creating the contraction in the breast, contraction in the uterus. Okay. Oxytocin वो हार्मोन है जो contraction create करता है. कहाँ पर? The contraction in the breast and the contraction in the uterus. So it's responsible during the delivery. Or this is also called love hormone. Love hormone. Oxytocin is the love hormone. It's getting secreted when someone with the love of opposite sex. Okay. ये तो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम हो गया. इसका संबंध ओवरी से नहीं है. No. Let's talk about the intermediate pituitary, which is secreting one hormone that is called MSH. What is the meaning of MSH? MSH का मतलब क्या है? एक ही हार्मोन हम यहाँ बता रहे हैं. MSH का मतलब क्या होगा? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन का नाम है MSH. What is the meaning of MSH?
MSH is a very important hormone. कभी MSH means melanocyte stimulating hormone. So the meaning of MSH is melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone. क्या काम है इसका? This hormone will be traveling to the skin, and in the skin we are having one cell that is called melanocyte cell. They produce black pigment, melanin. They produce black pigment, melanin. तो आपको काला करने वाला यही हार्मोन जिससे आप परेशान हैं। परेशान है कि नहीं कि काले काले हम? यू वांट टू बी फेयर, यू डोंट वांट ब्लैक स्किन, यू वांट टू फेयर। अगर भगवान से आपने वरदान मांगा, भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं गोरा हो जाऊं या मैं गोरी हो जाऊं, तो भगवान ने कहा, ब्रेन ने कहा, ओके, किल द मेलेनोसाइट्स, किल द इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। भाई इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को मारो तो क्या होगा? थिंक, a brain is killing your intermediate pituitary, that is called autoimmune disorder. A brain will be killing your intermediate pituitary. अगर आपके ब्रेन ने आपकी ही इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को मारना चालू कर दिया तो क्या हो सकता है? तो एमएसएच हार्मोन नहीं बनेगा या कम बनेगा, फिर क्या होगा? तो मेलेनोसाइट सेल को कोई एक्टिवेट नहीं करेगा, फिर क्या होगा? काला पिगमेंट नहीं बनेगा, तो आप गोरे नहीं, सफेद दाग हो जाएंगे। व्हाइट पिगमेंट, व्हाइट बॉडी, पिगमेंटेड बॉडी, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, right? Vitiligo. So this part play a very important role. That's why vitiligo is called autoimmune disorder. जब हम ल्यूकोडर्मा की बात करते हैं, so in the ल्यूकोडर्मा और vitiligo की बात करते हैं, what is that? It is one type of the autoimmune disorder. When your brain is killing your own melanocyte cell, जब ब्रेन हमारी खुद की मेलेनोसाइट सेल को मारने लगता है तो काला पिगमेंट बनना बंद हो जाता है। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ द इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। लेट्स कम टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका क्या काम है? द एंटीरियर पिट्यूटरी इज द पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड secreting highest number of hormones. हमारी ये एंटीरियर पिट्यूटरी एक वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो सबसे ज्यादा हार्मोन का निर्माण करती है। बताइए कौन कौन से हार्मोन बनाती है? टेल मी द नेम ऑफ ऑल द हार्मोन मेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। चलिए दो चार हार्मोन के नाम तो बताइए कि वो कौन से हार्मोन हैं जिनको एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। क्या एंटीरियर पिट्यूटरी जरूरी है और क्या ओवरी से इसका कुछ संबंध है? What is the connection of anterior pituitary with the ovary? Is there any connection? कोई कनेक्शन है? क्या बनाती है? ओके, आप वाह वंडरफुल, सारे हार्मोन के नाम लिख डाले आपको सब पता है।
एक्सीलेंट। सो एक दो हार्मोन और बता दो तो पूरे हो जाएंगे। एक दो छोड़ दिया आपने। एक हार्मोन तो किसी ने नहीं बताया, एक सबने छोड़ दिया। किसी ने एसीटीएच नहीं बताया, एसीटीएच बाकी सब बता डाले, है ना। एसीटीएच भी होता है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्या टॉपिक लेके बैठ गए, सब पता ही है पहले से, ऐसा लग रहा है किसी है? नहीं लग रहा सब पता है यार हमको यार। क्या तुम बता रहे हो? चलिए थोड़ा सा बता। ओके। अरे आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं यार सच में, मतलब मास्टर हैं आप सब। ट्रेटाइज ग्रुप मीन्स मास्टर ग्रुप। इनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, थोड़े से में समझ जाते सब, है ना। सो वेन वी टॉक अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी, the intermediate and the posterior pituitary. So whenever you talk about the anterior pituitary, the many hormones are secreting from the anterior pituitary, like growth hormone, responsible for the growth of the bone, growth of the body, thyroid stimulating hormone, which is controlling the secretion of thyroid gland. इसी को नापते हैं जब थायराइड की बीमारी हो जाती है। नंबर 3, GTH, gonadotrophic hormone. Okay, for there are two types, for the male or and female both. So there are two types of gonadotrophic hormone. They are FSH and LH. ये दोनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो गोनेट्स पर काम करते हैं. दे विल वर्क ऑन द ओवरी इन द फीमेल एंड टेस्टिस इन द मेल. तो अब बताइए कि ओवरी को कौन कंट्रोल करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी? राइट इन द चैट बॉक्स ना. कौन कंट्रोल करता है? अब बताइए. जिन लोगों ने गलत बताया था वो तो जरूर बताइए. जिन लोगों ने सही, तो 80% लोगों ने. आपको बिल्कुल दिमाग में ये बिठा लेना है. Because in the TCM we have different point for the anterior pituitary and the different point for the intermediate pituitary and the different point for the posterior pituitary. We will be discussing all. हम सब का डिस्कशन करने वाले हैं. When we are controlling the anterior pituitary and we are controlling the ovary, then only we will able to treat the ovarian cyst successfully. तभी तो ओवेरियन सिस्ट को हम ठीक कर पाएंगे ठीक से. तो हमने देखा कि अब हमें पता चल गया भाई कि जीटीएच तो निकल रहा है कहां से? जीटीएच निकल रहा है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से. तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने तो जीएच भी बनाया है, ग्रोथ हार्मोन. जी टीएसएच भी बना दिया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जीटीएच भी बना दिया, गोनेडोट्रोपिक. अब ये बताइए कि जब किसी की थायराइड कमजोर हो जाती है, when the person is suffering with the hypothyroidism, do you know that hypothyroidism? सबको पता है ना हाइपोथायराइडिज्म. यस. तो टीएसएच बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है कि घटता है बताइए. तो फिर हाइपो क्यों बोलते? फिर हाइपो क्यों बोलते?
TSH तो बढ़ रहा है। मनिंदर जी को पता, इसलिए मनिंदर जी से नहीं पूछेंगे, उनको पता। TSH इज राइजिंग, TSH तो बढ़ रहा है, फिर हाइपोथायराइड क्यों बोलते हैं? Why? Because the gland is underworking. Okay. तो TSH is, why the TSH is high? तो चलिए एक कारण बता दीजिए, चलिए मनिंदर जी बताइए, TSH हाई क्यों है, बताइए। क्योंकि थायराइड कम काम कर रही होती है। हाँ, फिर से बोलिए। क्योंकि थायराइड कम काम कर रही होती है, तो पिट्यूटरी टीएसएच ज्यादा भेज के उसको सपोर्ट ओके, करती है। वंडरफुल, दिस द आंसर। कि जब बच्चा काम नहीं करता है तो पेरेंट को ज्यादा अटेंशन देनी पड़ती है उसके, और ज्यादा TSH सीक्रेट करना। सो व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, अंडर वर्किंग, हाइपो कंडीशन, आप सभी लोगों को पता ही है, मुझे पता है आप लोगों ने। सो व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज अंडर वर्किंग, then brain has to secrete more TSH, thyroid stimulating, because the now brain has to stimulate more and more, right? Yeah. The feedback loop is right. यानी ये उस तरह की बात है कि एक बच्चा है जो लेजी है, तो पेरेंट को सारे दिन उसके पीछे पड़ा रहना पड़ता है, चलो ये करो, चलो वो करो, चलो ये करो। So that's why if the TSH level is high, okay, means thyroid is not working properly, so that's why pituitary is secreting more TSH, right? In this way we have to find out, so that is the hypothyroidism. Okay, अब मान लो किसी को, so in this way we have discussed these hormone, but few more hormone. So GTH means gonadotropic hormone. Gonads means either the ovary or the testes. FSH means follicle stimulating hormone. और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही GTH है, यानी दोनों ही हमारे गोनेट्स के ही हार्मोन है। ये यही मींस FSH एंड LH मींस GTH। इनको हम GTH यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। वी आर टेलिंग देम GTH और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, राइट। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, TSH बनाया, GTH बना, कुछ और हार्मोन है, फटफट उनके नाम लिख देता हूं मैं। वन अनदर हार्मोन दैट इज ACTH, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड। So if the person is suffering with the problem of the adrenal gland, then adrenocorticotropic hormone, this is also secreted by the pituitary gland. इसका secretion भी pituitary gland से होता है। ये हमारे, this hormone is connected to the stress, anxiety, hurry, curry, worry, action, reactions, right? Okay. एक हार्मोन और है, उसका नाम क्या है बताइए। There is one more hormone which is very important. What is the name? बहुत ही स्पेशल हार्मोन है एक और, बहुत ही स्पेशल है, बताइए। जो जिसके बिना बच्चे का पेट नहीं भरेगा, बच्चा भूखा रह जाएगा, उस छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्म हुआ है। या so that hormone is called prolactin hormone. So that is the prolactin hormone, very very important hormone. So in this way now we have understood
there are many hormones are getting secreted from the pituitary gland and the anterior pituitary, and the prolactin hormone also getting secreted from the anterior. That is called PRL hormone, responsible for milk secretion. चलिए, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है. I went Surat for 2 day for treating the patient. One girl, maybe 80-90 years, she got pituitary gland tumor. Doctor has operated once. This was the third case I have seen in the last many years, the tumor of the pituitary. When the doctor checking the blood, the prolactin hormone is very, very high. उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन काफी हाई है, और हमें पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम तो है मिल्क का सिक्रेशन कराना. अभी तो वो बच्ची छोटी है, 18 साल की है ना, अभी उसकी कोई मैरिज भी नहीं हुई, तो प्रेगनेंसी वगैरह का कोई सीन नहीं है, राइट. बट स्टिल व्हेन स्क्वीजिंग द ब्रेस्ट, देन मिल्क इज कमिंग आउट. सो जब डॉक्टर ने देखा कि भाई इसके ब्रेस्ट में से मिल्क आ रहा है, उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक किया और वो हाई निकला. सो देन दे डिड द सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन, all the MRI, CT scan, multiple investigation of the brain, and finally declared there is a tumor in the pituitary gland. तो हमने देखा है कि कई बार जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत हाई होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन is the very high, is telling the tumor of the pituitary gland many times. Our one global balance method of Dr. Tan is working very nicely for that global balance method. I will share that treatment protocol with you. हमने वही लगाया रोज और उससे उसको आराम हुआ, because that protocol I already used earlier for some other patient was suffering with the same problem. That protocol is really very effective. On the one hand, we are using Jingwell point. On the other hand, we are using spring point. Then the feet, we are using river point. And the other feet, we are using Hisi point. In this way, we are making the global circuit. In the Dr. Tan balance method class, we already shared, but I will share with you also. I will send in the group. That is very wonderful protocol for treating the, as per my own experience, that is a very good protocol for treating the prolactin hormone. So what I want to tell you कि कई बार जब हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे ब्लड में बढ़ रहा है, ऐसा अक्सर देखने में आता है कई फीमेल्स, in the many females. So prolactin hormone is giving the message that this female is lactating, कि ये फीमेल मिल्क प्रोड्यूस कर रही है. यही तो मैसेज है. अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा है तो क्या बॉडी का मैसेज है? बॉडी का एक यही तो मैसेज है कि ये फीमेल मिल्क प्रोड्यूस कर रही है. दिस फीमेल इज प्रोड्यूसिंग द मिल्क. But suppose some female is very young, maybe 18 years or maybe 30 years, but not married or not get pregnant, but secreting the milk, then will suffer with the infertility. Because if prolactin is high, there will be temporary infertility till the prolactin is high. जब तक प्रोलैक्टिन हाई होगा तब तक लेडी के प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी. So this prolactin hormone also secreted by the anterior pituitary gland. So that's why anterior pituitary gland is very important.
Now we will be doing the treatment of the anterior pituitary gland. And remember one thing, what treatment we are planning, that will work everywhere. It will work for the prolactin, it will work for the adrenal gland problems, and it will work for the hormonal problems, and it will work for the thyroid, TSH, and it will work for the growth hormone. ये सब पर काम करेगा. अब हम जो एड्रिनल ग्लैंड के फॉर्मूले की हम बात करेंगे, ये सब पर काम करें, right? So let's write on the formula. Wonderful formula. The formula number 1, which is working on entire anterior pituitary. So divide the body in 4 parts. Right arm, left arm, right leg, left leg. So we have to put the jingle point here. We will be taking the spring point here. We will be taking the river point here, and we'll taking the Hisi point here. थोड़ा हम हेर फेर करेंगे, लेकिन हमारी मुख्य थीम यही रहेगी. So we are starting from here, lung 11, pericardium 9, and heart 9. All three are jingle point, right? Lung 11, pericardium 9, and heart. तीनों के तीनों जिंगवेल पॉइंट है. इसको हमने लेफ्ट में लिया, और ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट में लेना, अगले सेटिंग में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट कर देंगे. This time we are taking the certain point in the right, certain point in the left. In the next sitting we will change, because the most important is circuit जो हम बनाने वाले हैं. तो हम जो बना रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात तो सर्किट की है. So let's see. I know that you are knowing the location, but quickly I will show, because this is a wonderful protocol, and I know that if you know the exact protocol, there will be help of many patients. So look at here, the lung 11 point you have to put on the left hand. ये हमारा lung 11 है. Okay, we are very well aware. So put the needle, or you can use the sujog needle here. Okay. So this is the point number 1. The point number 2 will be heart 9. अब हम देखते हैं हमारे heart 9 की लोकेशन. So this is the heart 9 point we will be putting in the left hand, same hand, lung 11 and the heart 9. The third point will be pericardium 9. हमारा तीसरा जो बिंदु होगा वो होगा pericardium 9. So look at here in the middle finger, the tip of the middle finger is the point which is called pericardium 9. तो हमने pericardium 9 हम ये कोने में लगाते हैं. अगर आपने देखा होगा कि तीनों के तीनों पॉइंट हमारे रेडियल साइड में है, हमारे थंब साइड. So we are putting the pericardium 9 on this side. When we are bleeding the pericardium 9, we bleed apex of the middle finger. जब हम ब्लीड करते हैं तो हम अपेक्स को ब्लीड कर देते हैं. यहां ब्लीड करने की कोई बात नहीं, यहां तो हमें पॉइंट लगा. So we have completed the 3 point in the left hand. Now 3 point will be in the right hand. They are, so these 3 point are the yin. When we are making the circuit, so suppose we are taking the yin here, we will be taking the yang here, then again we are taking yin here, and we are taking yang here. अब हम यहां पर लेंगे yang. So Li3, triple warmer 3, and Si3, all the 3 are stream points, so stream. They all the 3 point are the point of yang.
तो ये पॉइंट अब राइट हैंड में लिए जाएंगे. सो क्विकली सी द लोकेशन ऑफ Li3 first one. So you can see the location of Li3. This is the proximal from first, this is the proximal from index finger MCP joint. हम देखते हैं Li3. Right. So this is the location of Li3. We are putting in the right hand. Now let's move to the triple warmer 3. अब हम ट्रिपल वार्मर 3 की लोकेशन आपको दिखा देते हैं. So let's see the location of the triple warmer 3. This is the point here. If we are going from the knuckle, the same point we used for the hypothalamus. ये वही पॉइंट है जिसका प्रयोग हमने हाइपोथैलेमस के लिए किया था. अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी इसी पॉइंट का प्रयोग कर रहे हैं. We are using this point for the pituitary gland also. So this is the point here, right? Triple warmer 3. Now we are moving to the third number point that is found on the small intestine channel called SI3. हमारे तीसरे नंबर का पॉइंट है. हमारे हाथों में जो हृदय रेखा होती है, एस्ट्रोलॉजी में जिसे हार्ट लाइन कहते हैं, उसी की लाइन में है. और वी कैन टेल दिस इज जस्ट बिफोर द बोन हियर. हमारे एमसीपी जॉइंट पर हमारा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, उस बोन की proximal. This is the proximal from the MCP joint SI3. So 3 point we have taken in the right hand. Okay, now. So now we are going to the right feet. अब हम right feet में जाए. So first we have taken the point on the yin, then we have taken the point on the yang. Now we'll be moving to the yin again. अब हम yin पर वापस जाएंगे. अगर आपने देखा पहले हमने पॉइंट लिए टिप पर, टिप ऑफ द फिंगर्स पर. Then we have taken the point in the palm, means थोड़ा हथेली में आ गए. Now we will be moving little ahead और अब हम एंकल जॉइंट पर आ जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे हम घुटने की तरफ जा रहे हैं. Now we are reaching to the ankle joint and here we are taking 3. The point number 1 will be liver 4. Liver 4 exactly on the ankle joint. The point number 2 will be kidney 3 exactly on the ankle joint. And point number 3, we can take spleen 5, but as per the experience we have found spleen 6 is the better point. So we have taken 3 points. If you see all the 3 points of yin, so we are making wonderful circuit. So from the yin, then the yang, then again yin, and here we will be taking the yang. Then again yin. So this is the circuit formation. तो हमने 3 पॉइंट को यहां पर लिया, liver 4, kidney 3, spleen 6. So let's see the location of liver 4 here. Liver 4 is the point located on the ankle joint. We can see this is the medial malleolus, and just anterior to the medial malleolus we can feel the depression. This is the location of the liver 4. यहाँ पर ये टेंडन और medial malleolus के बीच में जो डिप्रेशन है, यहीं पर liver 4 है. liver 4 एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. It's a really very wonderful point, liver 4. So we are taking the liver 4 point. It's directly connected with the pituitary gland. हमारे pituitary gland से इसका सीधा संबंध है. I will tell you that when the person is having lots of emotional suppression, liver chi stagnation, liver 4 is one of the great point. liver 4 पर हमें एक point लगा देना है. Now kidney 3 is the very well known point. Kidney 3 is just on the back side of the medial malleolus. हम देखते हैं कि हमारा ये medial malleolus है, इसके mid point से अगर हम पीछे जाओ, so this is the kidney 3 point is located. So we'll put 1 point here, and the third point here we are going to put, that is spleen 6.
हमारा जो तीसरा बिंदु होगा वो स्प्लीन 6 होगा। स्प्लीन 6 इज लोकेटेड 3 चुन अप फ्रॉम द मीडियल मेलुलस। हमारे मीडियल मेलुलस से 4 अंगुल ऊपर या 3 चुन ऊपर है, हड्डी के बॉर्डर पर। So this is the tibia bone and this point is located. So we are measuring with the help of 4 fingers. This is the point, spleen 6. Now the last formation of the circuit will be, we are taking here the point over the knee joint. They are called he-see point. Stomach 36, gallbladder 34 and urinary bladder 40. हमने तीनों पॉइंट ले लिए, तीनों पॉइंट को हम ही सी पॉइंट कहते हैं, तीनों यांग के पॉइंट्स हैं। सो we are completing the circuit by taking these 3 points. Stomach 36. So this is the location of stomach 36. It is the 3 chun distal from the kneecap. हमारे kneecap के lower part से 3 chun नीचे होता है. So this is located on the border of tibia bone. So we can see this is the depression here. Okay. So on the tibia, we are going 1 chun ahead, 1 chun lateral. We will find the, so we are from the knee joint, we are going 3 chun down. So this is the stomach 36. We can feel the border of the bone. हम हड्डी का border feel कर सकते हैं, तो ये हमारा stomach 36 है. This is the point, he see point. Then we are taking the urinary bladder 40, which is located on the back side. हमारा bladder 40 है, जो हमारे घुटने के ठीक बीच में होता है, खूब बीचों बीच, just in the center of the knee crease. If we fold the knee, we can see the center of the knee crease. That is the urinary bladder 40 point, the wonderful point or the he-see point found on the UV channel. So this is the central point. यहाँ पर central point है. And the last point, that is gallbladder 34. The gallbladder 34 is also located here. हमारा gallbladder 34 भी घुटने के पास में होता है. So we can see here, this is the location of the gallbladder 34. We can feel the bone, the side bone, that is fibula bone. The anterior border of the fibula bone, that is gallbladder 34. हमारे घुटने से लगभग ये 3 चुन नीचे होता है लगभग, या हम मानिए कि अगर हमारे घुटने की क्रीज से थोड़ा नीचे होता है. So we have to feel the tibia bone and anterior border of the tibia bone, that is the location of gallbladder 34 done. So this is the formation of the global circuit. So we have made the wonderful circuit. हमने बहुत ही शानदार सर्किट का निर्माण किया. Lung 11, heart 9, pericardium 9, Li 3, triple wormhole 3, Si 3. Then liver 4, kidney 3, spleen 6, and finally urinary bladder 40 here, stomach 36 and gallbladder 34. So this is to balance the pituitary gland. To balance pituitary gland. So this is the formulation number 1. हम एक दूसरे फॉर्मूले की बात भी करेंगे, but initially we started our journey from the triple wormhole 3. We have controlled the hypothalamus. Now we have came to the pituitary gland. Now with the help of this protocol, we are controlling entire pituitary gland. हमने पूरी की पूरी pituitary gland को कंट्रोल कर लिया, उसके सारे secretion को हमने बैलेंस कर लिया. Now after the pituitary, our next step is ovary, because we want to work on the PCOS. So now we have to discuss 2 more things. Number one another formula to control the pituitary secretion, to control the pituitary gland, to balance the pituitary gland. Number 2, we have to learn the separate protocol for the anterior pituitary, for the intermediate pituitary, and for the posterior pituitary. क्योंकि किसी को इसकी प्रॉब्लम होगी, किसी को इसकी होगी, किसी की इसकी होगी. And finally we have to discuss the formula of the ovary. और अगर आपने इस तरीके से ट्रीटमेंट किया, 100% we will get the success. I have seen
This is a clinical experience. Thank you so much. Let's close the session. बहुत धीरे धीरे बताया, थोड़ा स्लो बताया, लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बाद में बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो स्लो गाड़ी चलने दो, है ना। देखो क्या होता है, 70% लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, 20% लोगों को धीरे समझ में आता है, फिर वो मैसेज करते हैं बार बार, है ना। तो मैंने कहा अभी हमारी गाड़ी स्लो ही चले, राइट, ओके फाइन, ठीक है ना, चलेगा ना, स्लो ट्रेन में मजा आ रहा है, स्लो ट्रेन। चलो ठीक है, फाइन। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते, अब हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, क्लोजिंग दिस। ओ कमल वेंसिट जी, आई वाज टेलिंग मिस्टर कमल that we are moving slow, so are all of you are comfortable if we move slow? We are not moving in the hurry, so just we discuss this, nothing else. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. Let's close the session. Yeah, anterior pituitary, this formula for both, whether the male is having the problem of the anterior pituitary, like male also might suffer with the sexual problem, hormonal problem, right? Or the female also might suffer. So this formula, what we discussed, is the end for the anterior pituitary, whether for the male or the female, right? Okay. What types of the male problem? Male problem like impotency, erectile dysfunction. Okay. Sometimes like sperm is no formation of the sperm, or the decreased oligospermia, decreased formation of the sperm. These all are the problem of the male. Or no growth of the hair, daddy mooch. Okay. Okay. The all problem which is happening because of the hormones, that is the problem of the male, right? Okay, done. So let's see you tomorrow. Good night.